आपने 10th कौन सी ईयर में किया? Sir, 2011. और 12th? 2013. How many percentage? Sir, in which class? Percentage of marks. In 12th class? Oh. 78%. You did LLM 2020. Yes, sir. What do you know about cheating? So what about? Cheating under IPC. Okay, sir. So in cheating, section 420 basically deals with the cheating of Indian Penal Code. It talks about that whenever any person dishonestly deceives any person to do something which any person is not going to do, or asks him to not to do something which he is legally entitled to do. In that case, what do you know about deception? Yes, sir. As you have told me. So deception is basically to make someone believe something which is actually not true. Concealment of fact. Yes, sir. What do you know about cognizable and non-cognizable cases? Okay, sir. So section 2C and 2L of the Code of Criminal Procedure basically deals with the same. Cognizable cases are the cases and the cases in which the police officer has an authority to arrest without warrant, whereas in non-cognizable cases a police officer cannot arrest without warrant. What is the difference between acquittal and discharge? So in case of acquittal, this is a final judgment. In general rule is that in case of acquittal, a person cannot be retried. The principle of the principle applies that the person cannot be prosecuted or punished for the same offence again. That applies in case of acquittal, but not in the case of discharge. In case of discharge, if any new fact is discovered, in that case the person can be again tried for the same. One trial Sir, is not correct. So in case of discharge? Once again, explain. Honorable Chairman sir asked you what is the difference between acquittal and discharge. Okay, sir. And you were saying something different. Okay, sir, I'll try again. I'm sorry. Sir, in case of, the acquittal is the result of the trial, in which conviction or acquittal is the result of the trial. Whereas discharge is not the result of the trial, it takes place somewhere before the trial starts. And what is the result? Discharges of what result? Generally of an inquiry. Yes. In case, sir, for example, sir, whenever charges are framed, before that the arguments are done on charges, and if the person is prima facie not found to have committed any offence, in that case the person is discharged. But this is not the result of the trial. This is a pre-trial stage sometimes. What do you know about the scope of proceeding? So stop Section it. 258. Yes, sir. So section 258 of Code of Criminal Procedure deals with the same. In summons cases which are instituted otherwise than on complaint, in those cases the magistrate has power to stop the proceedings, and in that case if the material evidences are recorded, then the accused is discharged acquitted, and in other cases the accused is discharged. Discharge or the stop proceeding, what is the difference between the two terms? Discharge and stop proceeding. So discharge is generally done before the framing of charges in any trial, whereas stoppage of proceeding can be done by the magistrate at any stage of the proceeding during the trial and before the judgment. Discharge में proceeding initiate हो सकती है? Yes, sir. So section 300 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें भी बता रखा है कि सेक्शन 258 में भी अगर कोई डिस्चार्ज कर देता है तो उसमें भी जो प्रोसीडिंग है वो वही कोर्ट की कंसेंट से दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्चार्ज का प्रोविजन है 258 में भी. एक गवर्नमेंट से या कोई अटैच हो गया, कोई किसी की गाड़ी अटैच हो गई, या कोई एनिमल समझ लो जैसे बफेलो है. जी सर. और वो अटैच करके कोर्ट का आदमी ले जा रहा है उसको अटैच करके, पीछे से उनकी घरवाली आई और उसको छुड़ा के 2-4 उसके मार मूर के उसको वापिस छुड़ा के ले आई. What offense she has committed? She has beaten the government employee.
नहीं, उसको भैंस को एक दो मार करके छुड़ा करके ले आई वापस, जो उसको अटैच शुदा थी, उड़क शुदा थी। यस सर। और वो ले जा रहे थे गवर्नमेंट सर्वेंट उसको। Sir, in my opinion, probably this is theft only because it was in the possession of that particular person. Theft? सर वो एक और ऑफेंस है पर वो मैं सोच नहीं पा रही हूँ अभी कि वो उसको she had committed offense under section 379 of IPC theft. So that is what I'm able to think right now. What do you know about culpable homicide not amounting to murder and murder? Okay, sir. So culpable murder is basically the most heinous form of culpable homicide, whereas culpable homicide not amounting to murder are the certain circumstances in which any murder falls under the category of culpable homicide. First of, there are 5 exceptions to the definition of murder itself in the Indian Penal Code. Those are all the situations in which the murder itself amounts to only culpable homicide and not murder, because they are somewhere lacking in some ingredient of the murder. For example, in case of private defense, if any person exceeds that private defense, then which is allowed to him, in that case if he kills some person, then that is not murder but culpable homicide. Robbery and डकैती में एक लाइन में एक सेंटेंस में डिफरेंस बताओ मैंने। So minor difference. है भी एक ही डिफरेंस, robbery and डकैती। So number of persons. और आशा जी, Yes sir. कोई अपराध होता है उसकी स्टेज होती है, Yes, sir. 3 स्टेज से निकल के कमीशन होता है। अच्छा सर, सर पहले उसके लिए एक मोटिव होना चाहिए, मतलब फॉर आई मीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड कम इन योर माइंड. Intention you must form for that. मोटिव नहीं, intention. Yes sir. Intention you must have in your mind. Then you have to prepare for the same. That whatever articles or whatever is required to commit that offence, that is the preparation stage. Then you attempt for it, means that you do some act towards the commission of the offence, and when you actually do that act, that is the commission of an offence. Is there any offence in which preparation is there any crime in which the preparation is offence? Yes sir, in case of dacoity under section 399, preparation is also an offence, whereas in case of waging of war, preparation is also an offence. Any other offense? So right now I'm not aware, sorry. I cannot recall right now if any there is any. You're right. Waging the war? Sir, I stated that. Waging of war. Yeah. Yes, I stated that. That in case of waging of war, preparation is also punishable. अच्छा, सम्मन केसेस में विड्रॉल किया जा सकता है। सम्मन केस को कोई कंप्लेनेंट विड्रॉ करना चाहता है, वो कर सकता है? Yes sir. कर सकता है। Sir, in absence of complainant, वो automatically. हाँ. कोई I am complainant and I want to withdraw my complaint Yes sir. before the magistrate. Yes sir. What should the provision? What is the provision in the CRPs? Sir, I am aware with only section 321 of the Code of Criminal Procedure, which talks about the withdrawal of the complaint, but I am not pretty sure about it right now. Yes. 256. Yes. 256 256. Okay sir, thank you. CRPs. 321 में स्टेट लेती है। वो सर 256 का मुझे इतना याद है कि वो एब्सेंस ऑफ कंप्लेनिंग में होता है शायद, तो इसलिए मुझे श्योर नहीं है, सॉरी सर. अच्छा, आपने रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है? पढ़ा तो है सर. रेंट कंट्रोल एक्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कौन से सेक्शन में होती है? सर ऑर्डर की, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. सेक्शन 20 होता है यस सर. उसमें। ओके सर, थैंक यू. कोई आपके पास सिविल सूट है, यस सर. वो आपके जुडिक्शन का नहीं है, यस सर. आपको लगता है कि हमारे जुडिक्शन का नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसमें? सर अगर प्लेंट मेरे पास आई है तो मैं रिटर्न करने का एक प्रोविज़न है वो कर सकती हूँ.
और एक हाँ, रिटर्न करेंगे? एक तो रिटर्न का प्रोविजन है कि मैं उसको जो भी कौन से सेक्शन ऑर्डर में है? सर ऑर्डर 7 रूल 10 में है रिटर्न का प्रोविजन। वेयर एज अगर लेटर मतलब प्लेन देख के मुझे लगता है कि जुरिडिक्शन में नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो सेक्शन 711 इज ऑल्सो अप्लाइड। सॉरी, ऑर्डर 7 रूल 11 इज ऑल्सो अप्लाइड। सॉरी सर। 7 और 10 सही है। इसमें आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? सर ऑर्डर 7 रूल 10, सर ऑर्डर 7 रूल 10 में जो प्लेंट आती है उसको मैं रिटर्न कर सकती हूँ, जो भी रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने से क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? फिर उसके बाद अगर वो चाहे, अगर प्लेंटिफ चाहे तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि उसको बताया जाए कि कौन सी कोर्ट में उसको जाके वो जो सूट है वो फाइल करना चाहिए, प्लस वहाँ की जो डेट है फर्स्ट वहाँ पे जा जिस दिन अपीयर होना है उनको वो डेट फिक्स करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा उस पर, और ऐसे ही जब ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट उसको बता देगा कि कौन सी कोर्ट में जाके सूट फाइल करना है और कौन सी डेट पे उनको अपीयर होना है। ठीक सर। Under which provision FIR can be passed before the High Court? सर सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। Under what provision a person can be discharged before recording trial? Before the trial, Yes. sir, in case of court of session trial, if the offence is exclusively triable by the court of session, in that case 227 is the provision where the person is discharged. And in case of warrant case, in warrant case the person is discharged under section 240, and in case of summons trial the person is discharged. Sir, I'm not aware with that right now. Cannot recall the section exactly. Under the income tax, civil and criminal proceedings are independent proceedings, or one is bearing on the other proceedings? Civil and criminal. Sir, in Are the income independent tax, proceedings? Are civil proceedings are bearing on the criminal proceedings? in income tax, Yes. sir, I'm not aware. Sorry, sir. It's I'm a not matter aware. of economic offence. Yes, sir. Sir, I'm not aware with the same. Sorry, sir. Okay. What is the latest judgment on 138 section NIA? Latest judgment on that? Sir, no, I'm not aware. Sorry, sir. Time limits for filing complaint. Yes, sir. Filing complaint under section 138. What is the time limit? Sir, for 1 month. And notice time limit? Notice is you have Under to section 138. 138 में 30 दिन में नोटिस देना होता है और 30 दिन का नोटिस देना होता है, और 15 दिन में उसको अगर वो डिपॉजिट ना करे अमाउंट उसके पास, तो फिर वो 1 मंथ में कंप्लेंट फाइल कर सकता है फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ दोज 15 डेज। What is section 245 of CRPC? 245, Bracket 2. sir, 245(2) talks about the discharge only in cases of before after the recording of evidence of the prosecution. Okay. Asha, Yes, sir. at what stage issues are framed in civil cases? Sir, at the first hearing of the suit. I'm asking though, on what stage issues are framed in civil matters? That If any stage is there or Sir, not? Sir, I'm not aware with the stage particularly, but once the admission and denial. कैसे सिविल केस कैसे चलता है, क्या अच्छा। करेंगे सिविल केसेस की प्रोसीडिंग क्या होती है? Okay, sir. इन ब्रीफ। Okay, sir. First of all, the case will be instituted as per the order 4. In duplicate, the plaint will be filed, and then the summon will be issued to the defendant, and the defendant will appear and present the written statement. And after that, the parties will then order 10 would be followed after that. What is given in 10? Sir, in order 10, there is admission and denial stage, that in case of any fact which has not been specifically denied in the pleadings, on that particular fact the court can ask them and record the admission and denial of the parties, and after that also the court can send the matter to the alternative dispute resolution under section 89. So rule 1A, B and C talks about the same of order 10, and in case it comes back to the court, then the oral examination of the parties would be done, and then after that the issues would be framed under order 40,
And before that also the documents are called and admission of certain facts, these order 12, 13 are being followed. ये सब सुना है, इम्पाउंड क्या होता है? इम्पाउंड Yes sir. क्या है ये? सर इम्पाउंड में कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास है, कोर्ट उसको रख सकता है जब तक कोर्ट चाहे, और उसमें जो रूल प्रॉबेबली रूल 8 प्रोवाइड्स फॉर द सेम ऑफ ऑर्डर 12 कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट के सामने आया है तो कोर्ट उसको अपने पास रिटेन करके रख सकता है अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द केस और अंटिल द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। क्रिमिनल में एक चीज़ बताया कि मान लो चार्जशीट पेश हो गई, यस सर। है ना, मामला मजिस्ट्रेट के सामने आ गया, यस सर। उसने उसे कमिट कर दिया, यस सर। और सेशन जज के पास चला गया, पता लगा कि वो तो जो कमिटल हुआ है, सेशन जज ने देखा कि ये तो मेरे द्वारा ट्रायल नहीं होना चाहिए था, मजिस्ट्रेट द्वारा ही होना चाहिए था, यस सर। तो सेशन जज क्या करेंगे? सो सेक्शन 228 का जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए है उसमें बोला है कि अगर कोई ऑफेंस जो है कमिट हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन को और उसका ट्रायल अगर उसको लगता है कि वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज सकता है या और किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, और वो फ्रेम चार्ज करके भी भेज सकता है और अदरवाइज भी भेज सकता है, और उस मामले को वो पुलिस रिपोर्ट मान लो फ्रेम करके भेज दिया सेशन जज। हाँ जी सर। तो नीचे का जो ट्रायल है फिर दोबारा से चार्ज लगाएगा मजिस्ट्रेट? नो सर। तो सो चार्जेस अगर कोर्ट ने फ्रेम कर दिया तो फर्दर स्टेज से वो स्टार्ट करेगा। अच्छा जी सर। अच्छा, ये कमर्शियल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में क्या अंतर है? नाम सुना है कमर्शियल कोर्ट्स? सर सुना है पर मैं एग्जैक्ट आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। न्यूली अमेंडेड और न्यूली एडेड प्रोविजंस इन सीपीसी। यस सर। एंड अब तो काम कर रही हैं कोर्ट्स, क्या अंतर है? Sir, I'm not actually fully aware with the concept, but probably the commercial matters are being seen in those courts. That's what I can say. Sir, I'll read into it. अभी इन प्रेजेंट कौन सा ऐसा मुद्दा है जो नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है? So, a few of them are like, one of them is anti-defection law, which has come into the limelight in last few days, and also this the comment by one of the prominent ex-leaders. क्या है anti-defection law में? सर एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्केड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसके बारे में बात करता है कि अगर कोई भी मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो क्या ऐसी खराबी है इसमें कि अभी भी लोग पार्टियां बदलते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? जी तो सर। क्या बुराई है या क्या लोग प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहा? सर मैं सिर्फ एक ही इस चीज़ में मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है वो ठीक किया जाना चाहिए, पर मुझे बस एक ही डिफेक्ट लगता है कि क्योंकि किसी भी पार्टी जो भी एक होती है उसको लोग वोट देते हैं, तो अगर बीच में अगर कोई भी मेंबर्स उसको छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन अपना दिखाया है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को अपना सपोर्ट दिखाया है, दैट गेट्स हिंडर्ड. But otherwise there should be provisions like that, because all the time we cannot bound any person to follow some party who is actually not complying with the manifestations. Not bound to follow the party, उसी के आधार पे तो वोट मिले हैं। सर वो है, लेकिन अगर वो पार्टी ही अपने मैनिफेस्टेशन पे वर्क नहीं कर रही है तो आई थिंक देयर शुड बी सम प्रोविजन कि हाँ उनको उससे भी डाइवर्ट होके वो उस मैनिफेस्टेशन एक नाम सुना, व्हिप जारी हो गई। यस सर। क्या है? सर व्हिप में होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन जो होता है या कोई भी अगर मुद्दा है उस पर पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को किस फेवर में या अगेंस्ट में वोट करना है उसके लिए व्हिप जारी होता है। ठीक है सर। थोड़ा यहाँ पे है ना, ये जो बेसिक लॉ